Hello students, today we are going to learn chapter number 5 from geometry. The name of the chapter is coordinate geometry. We are solving the first exercise of this chapter, exercise 5.1. The exercise 5.1 will be found on page number 107. This exercise is based on one formula. The name of the formula is called distance formula. Let us understand distance formula. Suppose we have 2 points on coordinate system, that is on graph. Say point A and point B anywhere on the graph. If this is the graph, A and B are any 2 points. They can be anywhere on the graph on any quadrant. Of course, the point has got coordinates. Say A has got x1, y1 coordinate and B, suppose it has got x2, y2 coordinate. You know what? This formula helps us to find the distance between these 2 points. We can find the distance between these 2 points A and B. The distance formula gives us the formula to find the distance between these 2 points. The formula is equal to the whole root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. If you want to find the distance between the 2 points A and B, we write AB is equals to the whole root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Remember, this AB can also be written as length of segment AB. Remember, it is also called as length of segment AB. It can be also written as distance between the points A and B. D लिखेगा, A comma B लिखेगा bracket में, and this is read as distance between the points A and B. This is read as length of segment AB. दोनों को सिंपल मतलब में लिखा जाएगा AB. Henceforth, we will always write simple AB. If you want, you can write length of segment AB. If you want, you can write distance between the points A and B. But this is the format. We will always use the above format, simple AB. So, the formula says distance between the points A and B, length of segment AB or self AB is equals to the whole root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Using this formula, let us solve the first question. The question says, find the distance between each of the following pairs of points. The first sum is A, 2, 3, B, 4, 1. Remember students, in this manner, you should always copy the sum. Remember, always copy the sum when you solve. Never copy the question. Repeating, remember, always copy the sum, never copy the question. This is how I have just copied the sum. The question says, find the distance between the 2 points. Here the 2 points are A and B, and we have to find the distance between them. So, how to solve it? Well, about this coordinates you have to mention x1, y1, x2, y2. With pencil or pen, whatever you have, you can write x1, y1, x2, y2. Then, by distance formula, AB is equals to the whole root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. We use the formula. x2 minus x1.
says 4 minus 2 the whole square plus 1 minus 3 the whole square. 4 minus 2 will give you 2. 1 minus 3 will give you minus 2. 2 का स्क्वायर 4 minus 2 का स्क्वायर 4. 4 plus 4 is 8. Root 8. This root 8, if you remember surds, then you can bring it into the form of mixed surd. ये राइट आंसर है. इसको बोलते हैं प्योर सर्ड. इसको मिक्स सर्ड में कन्वर्ट करने के लिए इसके फैक्टर्स ढूंढते हैं, प्राइम फैक्टर्स. दीज आर द प्राइम फैक्टर्स. अच्छा, सिंस दिस इज स्क्वायर रूट, तो दो का जोड़ी बनाने का है. देखो ये देखो पैर बन गया. इस तरह से दो का जो भी जोड़ी रहेगा उसको अंडरलाइन करने का. नाउ ये 2 का होएगा 1, 2 का होएगा 1, आउटसाइड द स्क्वायर रूट इसका होएगा 1, और ये अंदर लुक्खा 2 बच गया. ये अकेला 2 जिसको मैं बोलता हूँ लुक्खा 2 फंस गया. सो 2 root 2 इज ऑल्सो द आंसर. दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड सर्ड. दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड सर्ड. ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है. एंड इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो राइट आगे यूनिट्स, आगे यूनिट्स, आगे यूनिट्स. Remember both the answers are right. This is pure cell, this is mixed cell. So we have seen the solution of the first sum from exercise 5.1. Remember the question says find the distance between the 2 points. The third sum, the name of the points are R and S. If you remember, ऊपर लिखने का x1 y1, इसके ऊपर लिखने का x2 y2. Then you have to write by distance formula. RS is equals to, students, RS SR दोनों right है. If you want you can write SR also. The formula is this: x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. 0 minus 0 the whole square plus y2 minus y1, that is 5 upon 2. y2 minus this minus 3. माइनस माइनस 2 बार आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा. रिमेंबर दिस. ये प्लस कैसे हुआ? बिकॉज y2 I have written y2 minus 3 gives you plus 3. So directly you can write plus 3. 0 minus 0 is 0. 0 का कोई वैल्यू भी नहीं होता है. अगर इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. Here inside them you have to do cross multiplication. Yes students, you will get 5 plus 2 3s are 6 upon 2. Remember ये 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, forget it. You get 11 upon 2 का स्क्वायर. ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है एंड डायरेक्टली आंसर आएगा 11 upon 2 यूनिट्स. मतलब इसका स्क्वायर करोगे 121 upon 4, फिर उसका स्क्वायर रूट लोगे, बात तो एक ही बनेगी. सो डायरेक्टली वी कैन कैंसिल स्क्वायर रूट प्रोवाइडेड यहाँ पे बीच में प्लस नहीं होना चाहिए. रिमेंबर दिस. It should be only one term to cancel square and square root. We can answer 11 upon 2. One can also write as 5.5 units. 11 का आधा is 5.5. So both the answers are right. The sixth sum from question number 1. The points are W and X. Yes sir. x1 y1 लिखने का, x2 y2 लिखने का by distance formula. wx is equals to, formula लिखने का x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. 11 minus और एक बार माइनस becomes plus 7 upon 2 the whole square plus 4 minus 4 the whole square. ये 2 11s are 22 plus 7 upon 2 the whole square.
4 minus 4 is 0. 0 का square is 0. So there is no need to write again. इसको भूल जाओ, छोड़ दो. लिखना है तो plus 0 लिखो. You can forget. After this, you get 22 plus 7 is 29 upon 2. Remember students, this is a monomial. एक ही टर्म है, square root cancel हो सकता है, and the answer is 29 upon 2 और 29 का आधा 14.5 units. Both the answers are right. You can check the answer which is there in the textbook and you can keep the same answer. On the board is question number 2. The question reads as, determine whether the points are collinear. Determine whether the points are in a same line or not. Well, to determine it, in this chapter, we are going to use distance formula. We are going to use distance formula. Since this is a sum from chapter number 5, coordinate geometry, and it is from exercise 5.1. 5.1 is based on distance formula, so we are going to solve this sum using distance formula. We know very well the distance formula. We are going to apply the distance formula in this sum. To apply distance formula, we need 2 points. Here we have 3 points. So what are we going to do is, we will make pair of 2 points. The first pair is A and B. इसके ऊपर x1, y1, इसके ऊपर x2, y2. फिर लिखेंगे by distance formula. Remember, you have to write full form in your paper. This is short form. You have to write full form in your paper. AB is equals to the whole root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. 2 minus 1 the whole square plus y2 minus y1, that's minus 5, minus minus 3, that's plus 3. 2 minus 1 is 1, this is minus 2. 1 ka square is 1, minus 2 ka square is 4. Answer is root 5 units if you want to write. So this is the distance between AB. In the same way, we will find the distance between B and C, and we will find the distance between the points A and C. When we will find distance between A, B and C, we should write B and C together. By distance formula, we get BC is equals to, yes, इसके ऊपर लिखने का x1, y1, इसके ऊपर लिखने का x2, y2. x2 minus x1 the whole square, I am writing the formula, plus y2 minus y1 the whole square is equals to minus 4 minus 2 the whole square plus 7 minus minus 5, that is 7 plus 5. This will give me minus 6. Minus 6 ka square is 36. You can write 36 directly. 7 plus 5 is 12. 12 ka square is 144. And you get 144 plus 36, that is 180. Yes. This 180 is pure set. We can convert into mixed set by finding the factors like this. 180. Okay, factors. 45, 3, 15, 3, 5, 5, 1. So, while writing them, you get, say, 2 times 2, 2 times 3 is 1 times 5. We are converting this pure surd into mixed surd. तो क्या कर रहे हैं पता है, अपन इसको जोड़ी को बाहर निकालेंगे, तो ये 2 ये 3 बाहर निकल जाएगा और ये रूट 5 अंदर फंस जाएगा क्योंकि वो अकेला है. Answer is 6 root 5. If you want, you can write units. In the same way, we will now find the distance between A and C. That is 1 comma minus 3 minus 4 comma 7. Distance between the points A and C by distance formula, we get AC is equals to x2 minus x1 the whole square, of course under the square root of y2 minus y1 the whole square, minus 4 minus 1 the whole square plus
7 minus minus 3. 7 minus minus 3 gives 7 plus 3. This is minus 5 ka square. This is 10 ka square. This is 25. This is 100. This is 125. This is called pure surd. We will convert it into mixed surd. 125 के factors भी डालेंगे. 5 25s are 5 5s are 5 1s are. So you get 5 into 5 into 5 is equals to 5 root 5 units. So in this way we found 3 distances. First AB root 5 बोले तो 1 root 5. BC 6 root 5. AC in front of you 5 root 5. ये तीनों डिस्टेंसेस में से एक डिस्टेंस बड़ा रहेगा और 2 डिस्टेंस छोटे रहेंगे. एक डिस्टेंस बड़ा रहेगा और 2 डिस्टेंस छोटे रहेंगे. What we will do is बड़े डिस्टेंस को पहले अलग से साइड में लिखेंगे. If you remember BC was the big value 6 root 5. उसको नंबर 1 दे देना. 2 छोटे डिस्टेंसेस AB एंड AC उन दोनों को ऐड करने का. AB का डिस्टेंस था रूट 5. AC का डिस्टेंस है 5 root 5 and you get 6 root 5 number 2. So we discover that बड़ा is equals to छोटा plus छोटा from 1 and 2. We discover that बड़ा is equals to छोटा plus छोटा, and when it comes equal, we see that BC is equals to AB plus AC. When बड़ा is equals to छोटा plus छोटा, therefore we say that points A, B, C are collinear. Students remember, equal है तो collinear है, not equal है तो not collinear है. ये वाले सब में बड़ा distance is equals to छोटा plus छोटा हो गया. So when you are proving it that बड़ा is equals to छोटा plus छोटा like this from 1 and 2, you should say that the points are collinear. That the points are collinear. Remember, just for your information, ये collinear में A point 2 बार आया. It means A point must be in between B and C. A point must be between B and C. Remember, for your information, A point 2 बार आया, meaning just for information, ये डायग्राम में A बीच में रहेगा, B C is the big distance, तो वो बड़ा रहेगा. Just for your knowledge, BC जो है वो 6 root 5 है, AB जो है root 5 है, और ये जो डिस्टेंस है वो 5 root 5 है. That is total it will give 6 root 5. This is not the part of the answer, this is just for explanation. Please understand. Let us solve the second sum from question number 2. The question says, determine whether the points are collinear. The question is written only for your observation and for your knowledge. There is no need to write the question, but yeah, always copy the sum, never copy the question. 3 points are given, we will find 3 distances. Let me start. L minus 2 comma 3 and M 1 comma minus 3. When I am finding distance LM, I should write L or M together. Name them as x1, y1, x2, y2 by distance formula. Lm is equals to the whole root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. You get 1 minus 2 the whole square plus minus 3 the whole square. 1 plus 2 is 3 the whole square plus minus 6 the whole square. 3 का square is 9, 6 minus 6 का square is 36, 36 plus 9 is
46 minus 1, that's 45. The factors I know, 3, 5 are 15, 15 3s are 45. Oh yeah, you can convert it into mixed search. 3, 3, 5, that is answer 3 root 5 units if you want to write. In the same way, we will find distance between the points M and N. M1, minus 3 and भी लिख सकते हो, comma भी लिख सकते हो, and 5, 4. This is x1, y1. ऐसा नीचे भी लिख सकते हैं, remember, x2, y2. By distance formula, you find Mn. Mn is equals to, because of lack of space and not writing the formula, I am directly calculating the values. 5 minus 1 the whole square plus 4 plus 3 the whole square. How it has become plus? Because 4 minus 3, that becomes plus. 5 minus 1 is 4, 4 ka square is 16, 4 plus 3 7, 7 ka square is 49. You have to add 49 to 16, 16 and 49, the sum is 50, 65. Now this is a number 65. If you find the factors, you get 5 ones are 5, 3, 13, 1. So there are no pairs. So this answer remains as it is. There are no pairs. So ये ऐसा का वैसा ही रहेगा. Step by step, L minus 2, 3 and you get N 5, 4. Well, you can mention as x1, y1 and x2, y2. By distance formula, you get ln is equals to whole root of. Because of lack of space, I am not writing the formula, I am calculating the value. 5 plus 2 the whole square plus 4 minus 3 the whole square. 5 plus 2 is 7, 7 ka square is 49. 4 minus 3 is 1, 1 ka square is 1. This is root 50. If you convert, you get 2 into 5 into 5. जोड़ी मिल रहा है, इसको बाहर निकाला, 5 root 2 units. Check. Root 50, root 65, root 45. ये तीनों में बड़ा कौन है? रूट 65. तो उसको पहले लिखेगा mn is equals to root 65. Number 1. Understand students my example, my explanation. It will be same for any sum. I will not change it for the sum for the year. देखो सर क्या कर रहे हैं, 3 डिस्टेंस फाइंड किया ना, तो पहला डिस्टेंस कौन सा लिखा जो बड़ा है, वो ये बड़ा है. कंपैरिजन में ये यूज़ नहीं किया, कंपैरिजन में ये और ये यूज़ किया. ये बड़ा है तो उसको साइड में छोड़ दिया. यू मे लीव लाइन. अब ये दोनों छोटे छोटे हैं, ये 65 के बाद ये 45 और ये 50 वाले छोटे छोटे, मतलब आई मस्ट राइट ln प्लस ln. ln के वैल्यू है 3 root 5. You can write root 45 also. और ये है 5 root 2. ये लोग दोनों का एडिशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स. दे आर नॉट सिमिलर टर्म्स. वो लोग का एडिशन पॉसिबल नहीं होएगा. यही आंसर रहेगा. तो सर ये देखो, वो देखो, mn is not equal to the sum of lm and ln. Yes students, from 1 and 2 they are not equal. Remember, equal है तो कोलिनियर है, नॉट इक्वल है तो लिखने का therefore points L and N are not collinear. You can also use the word non. Is that clear students? Question number 3 is written on the board from exercise 5.1. Find the point on x-axis which is equidistant from A and B. Find the point
we have to find this point which is on x-axis, which is equidistant from A minus 3,4 and which is also equidistant, as I said, from B. We have to find the point. Matlab, we have to find the coordinates of that point. We have to find the coordinates of the point which is equidistant from the given points A and B. ये point का कुछ नाम दे देता हूँ. The point is denoted by capital letter, तो नाम दे दिया. ये coordinates को normally assume किया जाता है h, k. Normally the coordinates are assumed as h, k, not as x and y. They are assumed mostly as h, k. In this sum, we have to find the point on x-axis. On x-axis. Remember, students, in 9th standard you have learned that any point on the x-axis will have its y coordinate 0. Any point on x-axis will have its y coordinate 0. Any point on x-axis will have its y coordinate 0. मतलब ये तो 0 फिक्स है, तो इसको खाली क्या assume किया h. वरना कॉम्बिनेशन होता है h k, उसमें से k मालूम है 0 because it is on x-axis. So in short, we just have to find the value of h. Once we find the value of h, we can find the point which is equidistant from the two given points A and B. Look at the diagram. ये distance और ये distance same है. Yes, students, they have given that PA is equals to PB. This is given. Using this given condition, we have to find the value of h. That is indirectly we have to find the coordinate. We have to find the point P. I will mention by distance formula. Distance formula between P and A. Formula है x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. यहाँ पे भी formula लिखूँ, इसके लिए भी formula लिखूँ. 2 times I will not write the formula. 2 times I will not write the formula. तो formula लिखने की जरूरत नहीं है because I have mentioned by distance formula. Well, P और A को देखो. Formula क्या बोलता है पता है? अपना formula क्या बोलता है? ऐसा. x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Understand the meaning. किसका स्क्वायर है ये पता है? x2 minus x1. ऐसे नहीं बोलने का. ये पता है किसका स्क्वायर है? This square is the square of difference between the x coordinates. इसको बोलते हैं square of the difference between the x coordinates. ये रहा x coordinate, ये रहा x coordinate. इन दोनों का difference h minus 3 भी लो या -3 minus h करो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है बिकॉज लास्ट में तो स्क्वायर ही होने वाला है. व्हाट आई मीन टू से दैट, एग्जाम्पल 2 minus 4 करो या 4 minus 2 करो. 4 minus 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 4. 2 minus 4 करोगे तो -2 होएगा. -2 का भी आंसर तो क्या होएगा? 4 ही होएगा. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, the difference of the square, the square, when we find the difference और उसका स्क्वायर करते हैं तो वो बड़ा माइनस छोटा करो या छोटा माइनस बड़ा करो, इट्स वन एंड द सेम. सो हियर इन दोनों का डिफरेंस x2 minus x1 कुछ भी ले सकते हैं. मैं ले रहा हूँ वेरिएबल को पहले, आई मीन अननोन को पहले. h minus -3 मतलब होएगा h plus 3 the whole square. यू कैन टेक -3 minus h ऑल्सो तो भी चलेगा. But this seems very easy, so we are using h पहले. Plus y2 minus y1, 0 minus 4 the whole square. Same way we will do for PB. ये रहा PB. ये h पहले लिखूंगा, h minus 1 the whole square plus 0 minus -4 वो हो जाएगा 0 plus 4 the whole square. ये अंदर होएगा h plus 3 the whole square plus -4 the whole square. h minus 1 the whole square और ये होएगा 4 square. At this time only एक स्टेप करता हूँ मैं by squaring on both sides. स्टूडेंट्स ये इज इक्वल टू यहाँ पे है ऑलरेडी, तो यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आएगा. क्या आएगा? देयरफॉर आएगा. क्या आएगा? देयरफॉर.
सर आप क्या कर रहे हो, स्क्वायरिंग? हाँ, स्क्वायरिंग में रूट उड़ जाएगा, देखो h प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इज 16, h माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज 16. Here the plus 16 gets cancelled, तो क्या बचेगा? यही बचेगा. इसका एक्सपांशन आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये उसका एक्सपांशन है, a प्लस बी होल स्क्वायर. ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस 2 is 6h प्लस 9 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस 2 इंटू h इंटू 1 2h प्लस 1. h स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल, 6h उसकी जगह पे प्लस 2h, 1 उसकी जगह पे माइनस 9, 6 प्लस 2 इज 8h इज इक्वल्स टू माइनस 8, h इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू माइनस 1. जैसे ही h मिलेगा तो लिखेगा therefore p is -1,0. So this is the point -1,0 which is equidistant from the two given points a and b. The seventh question from the first exercise of geometry chapter number 5 says find the value of x if the distance between L and M is 10. ये given है, खत्म, and we have to find the value of x. We start this simple sum by distance formula. x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. यहाँ पे एक ही बार फॉर्मूला लिखने का था इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन दोनों साइड कभी भी फॉर्मूला लिखने का नहीं, एक ही साइड लिखने का एक ही बार, या फिर नहीं लिखने का. इज इक्वल्स टू 10 LM. So here when we write LM is equals to 10, which is what they have given, we should mention in our solution that L is x, 7 and M is 1, 15. इसको assume करने का x1 y1 और इसको assume करने का x2 y2. See, I am assuming this as x1 y1 और इसके ऊपर लिखा x2 y2. So I get 1 minus x, x2 minus x1, x2 minus x1 प्लस y2 माइनस y1. अभी देखो मैं x2 माइनस x1 करूँगा ना तो 1 माइनस x होगा. 1 माइनस x मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है वेरिएबल पहले होना चाहिए. सो आई एम रिमूविंग दिस एंड आई एम राइटिंग ऑन माई ओन एज x माइनस 1 द होल स्क्वायर. 1 माइनस x करो या x माइनस 1 करो, दोनों सेम होता है. और यहाँ पे 7 माइनस 15 करो या 15 माइनस 7 करो, दोनों सेम होता है. तुमको जो करना है तुम कर सकते हो. रिमेंबर दिस. द नेक्स्ट स्टेप इज बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. ये रूट निकल जाएगा और होएगा x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 15 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100. स्क्वायर रूट निकल गया और स्क्वायरिंग हो गया. इसका एक्सपांशन अपने को आता है यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी द होल स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये उसका एक्सपांशन है. 7 माइनस 15 होता है 8 माइनस 8. This is x square minus 2x plus 1 plus 64. Square of negative number is always positive. 64 plus 1 65 होएगा. 65 को वहाँ पे भेजने का x square minus 2x. 65 को वहाँ पे नहीं भेजेंगे, 100 को इधर लेके आएंगे. प्लस 65 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0. x square minus 2x plus 35 is equals to 0.
not plus 35, you will have to write minus 35 because plus minus minus होगा. Now I will take a break here. Carefully observe this equation. This is not a simple equation. This is called quadratic equation, and yet we have not studied algebra ka chapter number 2 quadratic equation. But in this sum we will have to find the value of x by solving this quadratic equation. Well, इतना difficult नहीं है, but you can solve it. ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में 0 है. लेफ्ट हैंड साइड को मैं रीड करता हूँ x² माइनस 2x माइनस 35. अरे ये 9th स्टैंडर्ड में था, इसको फैक्टराइज किया था. देखो ऐसे किया था, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया था, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया था. इसको स्प्लिट किया था. We will study in detail when we do quadratic equations chapter number 2. But for this sum, let me take it ऊपर से directly. इसके फैक्टर्स आएंगे 7 5 35, 7 5 2 भी दे देगा, मतलब माइनस 7x प्लस 5x उसके फैक्टर्स हैं. सो मैंने क्या किया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया. क्या किया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. रिमेंबर स्टूडेंट्स, वी विल गेट ऑल द बेसिक नॉलेज, we will get deep understanding when we do quadratic equation, but for the time being I'm just giving you the solution of this equation. ये कैसे सॉल्व करते हैं. इस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया तो 3 टर्म हो गए, 4 टर्म में से 2 टर्म में से कॉमन निकालने का. पहले 2 टर्म में से कॉमन निकल रहा है x माइनस 7 बचेगा. इधर जो भी साइन चुपचाप लिख देने का. इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 5 और ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 7. जो फर्स्ट ब्रैकेट में होता है सेकंड ब्रैकेट में वही चलता है. एंड इन दिस वे एक x माइनस 7 मिलेगा और एक x प्लस 5 फैक्टर मिलेगा इज इक्वल टू 0. तुम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ ये पार्ट किया था, बट आज 10th स्टैंडर्ड में इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 एक्स्ट्रा हो गया. दैट इज इक्वेशन. अभी व्हाट्स न्यू इन 10th स्टैंडर्ड, देखो क्या आने वाला है. इसको क्या करने का पता है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 0. इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है. द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 0. व्हेन द प्रोडक्ट इज 0, या तो ये 0 रहेगा या तो वो 0 रहेगा. मतलब x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखने का, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर यू शुड राइट x इज इक्वल टू 7 और तो है x इज इक्वल टू माइनस 5. सो द टू आंसर्स आर 7 और माइनस 5. प्लीज गो थ्रू.